Bismillahirrahmanirrahim. No doubt College of Hotel and Tourism is being a major role playing in terms of hospitality industry in Pakistan, and especially at Hashu Group. We've got a lot of professional staff. Our senior management all graduate, most of them are graduated from this College of Hotel and Tourism. Either they are affiliated or they got graduated or they have been teaching this institute. I would say thanks to Shafiq Saab and Robert Saab, because it's a long-term pending point which I've been discussing with them, is to have a professional kitchen and professional dining space available at the resources where they can train people online and they can train people with their own, people should work from their own hand, and they have done it, and I must say they have done it very excellently. And now we at PC would love to take more of our resource from College of Hotel and Tourism. At least they'll be more professional and they'll be more trained, and in future we would love to participate in any way, in teaching way or in terms of counseling, anything. If you need it, please feel free, and we are open to that. Thank you. Okay, opportunities definitely during COVID. This is the industry which has been hit most. This, and definitely there's the air and traveling. Basically, again, it's going to revert back with a more power. Definitely, इसमें professional people will be required locally, Pakistan and internationally. There is going to be a great demand of people, of skilled people, and the way I would say College of Hotel and Tourism is developing their resource and they are training them, I must say, and I'm really proud that we have one institute in Pakistan who is training at international level, and I expect a better result in future as well. And no doubt in 2021 and 2022 definitely the business will come back, and definitely all those people who are being trained here will get benefit out of it. मेरा पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से हमेशा ये शिकवा रहा है कि जिस किस्म के लोगों की पाकिस्तान को तरक्की के लिए ज़रूरत है, उस तरह के लोग हम पैदा नहीं कर पाते। अगर हम इंजीनियरिंग में देखें, हम मेडिकल साइंसेस में देखें या दीगर शोबों में देखें। लेकिन आज जब मैं कोदम के विज़िट पे आया तो मुझे कम से कम एक बात पे यकीन हुआ कि कलिनरी आर्ट्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, IATA के रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, वो जिस अंदाज़ में यहाँ में हो रही हैं, हमें इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो अपने काम में पूरी महारत रखते हों, और उनकी महारत की दाद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ना मिले बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी मिले। तो यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से जो ट्रेनिंग लेके गए हैं, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी फूड चेन्स में काम कर रहे हैं और अपनी महारत का लोहा मनवा रहे हैं। मुझे एक इस इदारे को देख के ये भी दिल में ख्याल आया कि काश ऐसा कोई इदारा इंजीनियरिंग के लिए हो, काश ऐसा कोई इदारा मेडिकल साइंसेस के लिए हो, काश ऐसा कोई इदारा सहाफ़त के लिए हो। हम सब को ऐसे इदारे बनाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और हाँ, नौजवान बच्चों का बाप होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा वालिदैन को कि जब वो अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर रहे हों तो स्किल्स की इम्पोर्टेंस को जहन में रखें और दुनिया में उन स्किल्स की डिमांड को भी देखें, तब अपने बच्चों का कैरियर प्लान करें।